Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Sidharth Arora. Friends, 26 November 1949 हम सब लोगों के लिए, for everyone who's a law student, who's a constitution student, एक बहुत important स्थान रखता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे पूरे ख्यालात में. Because 26 November 1949 को after a long time battle, hundreds of years, एक ऐसा बैटल जिसमें हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट एट स्टेक हो गया था. एक फॉरेन कंट्री आई, उस कंट्री ने हम लोगों को हमारी ही कंट्री में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बना दिया. उस कंट्री को आज़ादी मिल रही थी, उस कंट्री को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अनाउंस करने का मौका मिल रहा था. हमने बड़ी ही जोर शोर से अनाउंस किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. तब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड नहीं था. But we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी. ये जो पीपल थे ना, इनको कई सालों तक, कई 100 सालों तक सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया गया. हमें कोई राइट्स नहीं दिए गए, हमसे कुछ नहीं पूछा गया. इतना इमोशनल फीलिंग हुआ होगा उस दिन, जिस दिन हमने ये बात बोली होगी, वी द पीपल. तो वो बात बोलने के लिए, वो बात बोलने का इंतजार किया, माना. बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था माय फ्रेंड्स. जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया, उस दिन भी वो स्ट्रगल चल रहा था. वो बात अलग थी कि ब्रिटिशर्स जा चुके थे, बट देयर वर मेनी अदर ऑब्स्टेकल्स. बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत सारे सिचुएशंस थे जिनको अभी भी पार करना जरूरी था. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. कॉन्स्टिट्यूशन कोई कानून की एक किताब नहीं है जिसको तुमने लिखा और लिखकर तुम भूल गए. सर्टनली नॉट. देयर वर मेनी ऑब्स्टिकल्स. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा क्या मुश्किलें थी, क्या सवाल थे, क्या चैलेंजेस थे, क्या ऑब्स्टिकल्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बैठना था और उसको डिबेट करना था और इंश्योर करना था कि ये वो देश बने, वो भारत बने जिस भारत की हम सबने कल्पना की हुई है. उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना was no mean task. It was a very difficult task, and I will try and explain in this video क्या वो obstacles थे और उसका क्या जवाब दिया गया. So sit back, understand, and this will be a very beautiful journey to all of you. तो इससे पहले कि हम start करें, so this is with relationship to a very beautiful offer, an amazing offer, which is up to 50% off, which has been given by an academy along with 6 months free extension. So Raftar batch, which is the crash course for CSE 2024 and foundation batch for CSE 2025 are being launched. Please remember, use the code SIDLIVE, SIDLIVE. ये मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए. ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है. लाइव क्लास विद टॉप एजुकेटर्स मिलेगा, लेक्चर्स विद पीपीटी मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सीसैट ट्रेनिंग, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन अन अकेडमी विद दिस. अलॉन्ग विद दैट ये रफ्तार बैच जो कि इंग्लिश बैच है, यानी कि बाइलिंगुअल बैच है. ये बैच लाइव हो जाएगा 1 दिसंबर से, मंडे टू सैटरडे. करंट अफेयर्स कवरेज 1.5 years एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद ऑल इंडिया लीडर बोर्ड मिलेगा. लुक एट द एजुकेटर्स जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स में से सब लोग माहिर हैं. सो द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल. Don't miss any of these opportunities. Use this code, special code SIDLIVE to join this. फाउंडेशन बैच फॉर IAS 2025 और दिसंबर 4 2023 को ये लॉन्च हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. सो ये ऑप्शनल का सारे के सारे कोर्सेज आर अवेलेबल. ओनली यू हैव टू टेक व्हाट यू वांट टू गेट योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस. एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट फॉर यूपीएससी सीएसई 2024 टू 26 नवंबर 11 बजे, यानी कि जिस उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर के लिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो वीडियो है. ऑलराइट. सो उसी तरह से उसी दिन 11 बजे अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट है विद गिफ्ट वाउचर्स, लकी ड्रॉ, लाइब्रेरी एक्सेस टू अन अकेडमी स्टोर, फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड मैकबुक एंड लैपटॉप्स. मनी का इशू है. अन अकेडमी आपको 0% ईएमआई पर आपको मौका दे रहा है टू गेट ऑल दीज कोर्सेज. तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उस उपलक्ष्य में कि 26 नवंबर 1949 जो हमारे डेट हमने प्रियम्बल पे लिखा हुआ है. सो वी लुक एट द प्रियम्बल ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. This is an important part कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स तब नहीं थे. सो आई एम नॉट ओनली ट्राइंग टू गिव यू एन इमोशनल journey through the entire episode of forming of the constitution, but also
कि ये आपके लिए एक इंटेलेक्चुअली और अकेडमिकली वेल रिवॉर्डिंग वीडियो हो. सो प्लीज रिमेंबर ईच ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम सेइंग. सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ऑन द eve of the constitution, or rather on the day that the preamble was written, we were sovereign democratic republic. It was later in the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 that we added the word socialist and secular. Then go down, scroll down, and over there you'll see fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. You will notice conspicuous by its absence is a word called integrity. तब integrity word नहीं था. It was fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. Integrity word भी 42nd Constitutional Amendment Act 1976 से डाला गया. So तीन वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी आर द वर्ड्स जो कि डाले गए बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. Look at the photograph on the left side. This is the day of 26 November 1949 when the Constitution, Dr. Baba Saheb is giving this final draft of the Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad. Look at their expressions. 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days. The कठिन debate, consensus, utilization of practically every possible existing piece of law, constitution, whether international or whether our own law, everything was discussed. Clause by clause readings के बाद ये दिन आया और वो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, it is picture is worth 1,000 words. इस दिन 26 नवंबर को इसी उपलक्ष्य में हमारा देश सेलिब्रेट करता है संविधान दिवस और द कॉन्स्टिट्यूशन डे. लेकिन एज आई टोल्ड यू राइट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि इतना आसान नहीं था. इट वॉज नॉट दैट सिंपल. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस थे. लेट अस ट्राई एंड एन्यूमरेट एंड लेट अस आल्सो ट्राई टू एलैबोरेट व्हाट वर द डिफरेंट चैलेंजेस, व्हाट वर द डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, एंड अलोंग साइड विद दैट कि उन ऑब्स्टिकल्स के हमने क्या जवाब दिए and did we actually fare so well. Reason number one, the problem number one, the objection number one, the obstacle number one was the pain of partition. Now this is a very important thing that you will all have to notice. इतना आसान नहीं था. It was not that simple. Britishers जब इंडिया छोड़ के गए तो उनकी नीयत पूरी खराब थी, इसमें कोई डाउट नहीं था. They wanted India to be fragmented. They wanted balkanization of India. उन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी कि इंडिया टुकड़े ना हो जाए, और उसका उन्होंने शुरुआत बहुत पहले कर दी थी. उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पूरी तरह से खिलाफ थे. इनफैक्ट इट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक. लेकिन फिर भी अगर हम 20th सेंचुरी में भी माने तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो मॉडलमेंटो रिफॉर्म से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसी फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, वो कहते हैं ना फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री, वही फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री था विच एंडेड इनटू द पार्टीशन ऑफ इंडिया. ये जो फोटोग्राफ लॉर्ड माउंटबैटन की आपको दिख रही है, द 3rd of June प्लान, जून 3rd प्लान जब माउंटबैटन ने 3rd June 1947 को दिया, फाइनली एक्नॉलेजिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन हिंदू मुस्लिम लाइंस एज इन रिलीजियस लाइंस. मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, खेरपुर एंड द रीजन ऑफ सिलेट पाकिस्तान बन गया. So British India got divided into India as in India of our India and then Pakistan. किस बेसिस पे, क्यों बना? Most of it was the doing of Britishers themselves. And what did they lead to? They led to a civil war. Yes, it was a civil war. Britishers call it partition. You know why they call it partition? They call it partition because partition gives this entire episode a legal semblance. यार एक तरह से एक लीगल प्रोसीडिंग्स था. पार्टीशन लॉ का वर्ड है, एज इन द लॉ ऑफ पार्टीशन होता है, जमीन पार्टीशन हो जाती है, प्रॉपर्टी पार्टीशन हो जाती है. Britishers want us to believe that it was merely a legal separation of two pieces of land. Sorry. You will have to accept that you were the villains. Britishers ने इंश्योर किया था that ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस हद तक चली जाएगी जहां तक हम पार्टीशन के दिन पर आ जाएंगे. It was a civil war and nothing less than that. Millions of men, women and children were killed and displaced because of this part. ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं. बेस की ये लाइन एक्चुअली ये इंश्योर कर रही है कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को सेलिब्रेट कर रहे थे, ओके, उस टाइम पर एक ब्लड बाथ चल रहा था, एक सिविल वॉर, एक भाई भाई को, दोस्त दोस्त को अलग हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे.
एंड पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा था। दैट लेफ्ट इंडिया विद अ कम्युनल वॉलेटाइल एनवायरमेंट, और उस कम्युनल वॉलेटाइल एनवायरमेंट में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कितना कठिन होगा कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे होंगे तो उनको हमेशा ये स्ट्रेस रहा होगा कि ऐसा कुछ लिख ना दिया जाए, या ऐसा कुछ हो ना जाए, या ऐसी कोई कसर ना रह जाए जिससे कि ये कम्युनल एनवायरमेंट फिर से फ्लेयर अप कर जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, द स्टेट शैल एंडीवर टू एंश्योर दैट देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया? क्यों इसको फ्यूचर गवर्नमेंट्स के हवाले किया गया? क्यों नहीं उसी टाइम डाल दिया गया? सर इसलिए नहीं डाल दिया गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम डर था। हु विल बिल्ड द कैट? कहीं किसी रिलीजियस कम्युनिटी को ये ना लग जाए कि somebody is being favored, somebody is being opposed. Minority rights, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को इंश्योर किया गया कि उनके नर्व्स काम रहे, पता चले कि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक लैंग्वेज का नहीं है, ये सबका है। फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में डाला गया आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। द पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि इंडिया में ये सब कुछ लिखना, एक्सप्रेसली मेंशन करना एंड एलैबोरेटली मेंशन करना जरूरी था, बिकॉज द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन हैड exposed and it was hurting. Secularism, yes, secular गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्व धर्म संभाव हमारे डीएनए में। ये देश में ना तो कोई स्टेट रिलीजन है, ना हम एंटी रिलीजन होंगे, ये सबके लिए हुआ। द स्टेट विल बी सेम फॉर एवरीवन, सेक्युलरिज्म, दिस वाज ऑलवेज इन आवर डीएनए। सर्वधर्म संभाव वाज ऑलवेज इन आवर डीएनए। ऐसा थोड़ा ना कि था ये अभी था, बट हमारा ओन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म होगा। दिस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न डिविजन और वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, जिसमें स्टेट इज कंप्लीटली डाइवर्स फ्रॉम दिस रिलीजन। नो, we are equidistant. We will support every religion simultaneously. Sarva Dharma Sambhav. This was our concept of secularism, our own brand of secularism. Article 25, 26, 27, 28. We put it, all right. Freedom of conscience, Article 25. Freedom of management of religious affairs, Article 26. Freedom from any taxation on religious purpose, Article 27. And freedom from religious instructions or attendance to religious instructions, Article 28. It actually shows that we were secular in our spirit and in substance in the form of फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा डीएनए था, लेकिन हमको शो करना था। सो लाइक लॉ में बोलते हैं ना, इट इज नॉट इनफ दैट जस्टिस बी डन, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट जस्टिस बी सीन टू बी डन। इसीलिए हर चीज लिखना पड़ता था, जबकि हम एज अ सेड इन स्पिरिट इंडिया हमेशा से सेक्युलर था। मैं अजल से बंदा इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर्द तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं, मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाक़ैद दैरो हरम नहीं, मेरा एक नजर तुम्हें देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। दिस वॉज आवर ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। सो ये जो प्रिंसली स्टेट्स का सीन आने वाला था, ओके, द फ्रेगमेंटाइजेशन था, द बाल्कनाइजेशन, ब्रिटिश ने इंश्योर किया हुआ था कि जब वो जाएंगे तो इंडिया को ऐसे हालात में छोड़ के जाएंगे कि शायद ही इंडिया जुड़ पाए and fragmentation हो जाए। So the pain of partition, the pain of the communal environment, along with the disunity and the entire program that Britishers had done to ensure that India का जो यूनियन बना है वो कभी भी इंश्योर, कभी भी कंटिन्यू ना करे। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में जब ये लिखा गया था तो एक बात तो सही है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन क्या आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 के सुबह तक ये नहीं पक्का था कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स पूरा होगा कि नहीं होगा। अभी बहुत सारे रजवाड़ास थे, अभी बहुत सारे प्रिंसेस थे जिन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि ना, हम तो नहीं ज्वाइन करते। यू मस्ट एंड ऑल ऑफ अस मस्ट से साइलेंट थैंक्स। अगले 5 सेकेंड थोड़ी देर के लिए अपने मन में ख्याल लाओ और थैंक यू बोलो टू द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु एंश्योर्ड कि ये यूनियन हो जाए, ये यूनिफाइड इंडिया हो जाए। जब ब्रिटिशर्स ने रिलेशनशिप रखा हुआ था प्रिंसेस के साथ तो एक बड़ा अजीब सा रिश्ता था, उस रिश्ता को स्यूजरेंटी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी। इस हिसाब से जो प्रिंसेस थे वो वर्चुअली देवर इंडिपेंडेंट, they were having their own life, they were having their powers of making their own law,
और जब ब्रिटिशर्स का काम हो गया, जब वो जाने की तैयारी करने लग गए, तो उन लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 18 जुलाई 1947 को पास किया और बोला प्रिंसेस को, जी हम तो चले, राइट। आज के बाद तुम्हें इंडिया को ज्वाइन करना है, इंडिया को ज्वाइन कर लेना, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेना, कोई इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट करनी है तो इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट कर लेना। अरे यार, ये कोई अरेंजमेंट होती है? नाउ डू यू रियलाइज कि आपने एक कंफ्यूजन वाला एंगल छोड़ दिया एंड इंश्योर कर दिया कि अगर ये लोग हमें साथ नहीं ज्वाइन करते तो इंडिया एक फ्रेगमेंटेड कंट्री हो जाएगा। इट विल बिकम अ बाल्कनाइजेशन जिसको बोला जाता है, वो हो जाएगा। इट इज वॉज द ड्यूटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और उसमें सरदार पटेल को आप कभी नहीं भूल पाओगे। और इस देश को हमेशा एहसानमंद होना चाहिए टू द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल, कि उन्होंने इंश्योर किया कि ये नहीं होने देंगे, चाहे वॉट एवर ऑल द 540 प्रेसिडेंट स्टेट्स को यूनिफाइड करना पड़ेगा। उनमें से कुछ ने प्रॉब्लम भी की थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड लेटर इवन कश्मीर। सो हैदराबाद के निजाम, ओके, he was, did you realize that he actually engaged the most expensive lawyer, the best known lawyer of England, to take it as a legal issue that he wanted to remain independent. And then the later issues of Razakars, then Raja Hari Singh, Kashmir. Oh my God, how can you forget that part? In the first 1947-48, first Kashmir war, when Pakistan decided to send the tribals, the Kabaliyas, to forcibly take Kashmir in its hands. We had a very difficult journey, my friends. Okay, बहुत मुश्किल था। एंड इनफैक्ट ज्यादातर वेस्टर्न थिंकर्स, ज्यादातर पॉलिटिशियंस ने ये सोच के रखा हुआ था कि नहीं रहेगा इंडिया, इंडिया वोंट बी, विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कीप दिस यूनिटी टुगेदर। तो हाउ डू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिएक्ट टू दिस पार्ट? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यस, फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स। पहले से टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया, राइट, इंश्योर किया गया कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट, एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। ओके, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन होगा, देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर, देयर विल बी अ सेवन शेड्यूल, अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अ कंकरेंट लिस्ट, देयर विल बी सच पावर्स सो दैट सब लोग साथ में रहेंगे। Although we had an example of United States of America, which was a true federation, agreement based. We said, no, we don't want an agreement. We will remain with the spirit of federalism. We also had an example of United Kingdom as a unitary country. We said, no, we want to give provincial autonomy to the provinces. Imagine कितनी अच्छी तरह से बैलेंस किया गया. And that federalism is a part of basic structure doctrine of the Constitution of India as of today. So what a beautiful arrangement. इसको बोलते हैं फोरसाइट, इसको बोलते हैं जब आप सिचुएशन को समझते हो कि नाजुक स्थिति है, बहुत बहुत दुश्मनों की साजिशें चल रही है, लेकिन हमको इंडिया को बना के रखना है। सो ओन ब्रांड ऑफ फेडरलिज्म था, दिस वाज आवर ओन फेडरलिज्म। ओके, इसको इतना कि वेस्टर्न थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, क्वासी फेडरल बोला। केसी वेरे ने इंडिया के सिस्टम को बोला इट इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। I said, forget it. It's okay. Right. We will make a federal structure which suits our needs the best. So we ran through this entire thing and went to the third problem. The third problem is even more perplexing. The size and diversity of India. हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक, असम से लेकर गुजरात तक, there are so many languages, so many religions, so many communities, so many interests, so many demands, so many problems, सबको मर्ज करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, इतना इजी ये भी नहीं होता। इसलिए ये इजी नहीं होता बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि ये मेनी टाइम जीरो सम गेम हो जाता है। मैंने तुम्हारा भी भला किया और मेरा भी भला किया, सर्विस सुख हुआ, जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हारा फायदा करूंगा तो मेरा नुकसान हो रहा होगा, मैं तुम्हारा उनका फायदा करूंगा तो उनका नुकसान होगा। It many a times turns into a conflicting situation. Size and diversity is a very dangerous situation at that time. So how do we merge all of this part? हम लोगों ने नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं किया, तो ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। ओके, जबकि बहुत सारे लोगों ने बोला तमिल नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। ओके, मदर टंग को अप्रिशिएट किया जाएगा, मदर टंग को प्रमोट किया जाएगा, हिंदी को, इंग्लिश को अभी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फॉर्म यूज किया जाएगा। देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, वी विल नॉट बी एंटी रिलीजन। This is so beautiful. Everyone will be equal before the law. Article 14, equality before law and equal protection of laws.
There will be no discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, or any of them. There, all of that is looking at to make sure balancing interests. So linguistic minorities, cultural minorities, everything will be looked after. Also, law में the conflicting interest को merge करते हुए चलेंगे. DPSPs, right? Harmony maintain करेंगे. That is the word. Fraternity. बाबा साहब से पूछा गया था. Why are we using the combinations on this way? They said justice, social, economic, political. Russian Revolution से लिया हुआ concept था. And then the French Revolution. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and fraternity. Fraternity. We are brothers. We are all Indians. We are all brothers. Assuring the dignity of the individual. ये तब हो सकता है जब आप इन सारी चीजों को मर्ज करो. इट इज इजियर सेड देन डन, बट जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को साथ साथ में पढ़ते हुए देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है अनबिलीवेबल, ये कैसे मर्ज कर दिया, सब लोग साथ में कैसे हो गए. देयर इज हार्डली एन इशू ऑन द सेंटर, स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे इमरजेंसी प्रोविजंस में अचानक स्मूथ ट्रांसफर हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड देन जैसे इमरजेंसी हटती है हाउ डज इट कम बैक टू अ फेडरल स्ट्रक्चर. This is a beautiful thing. And this is only possible with that genius and that great intention जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था. So, bringing us to the next issue, reason number 4, what should be the nature of the constitution? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिफोर मैं इसको इलाबोरेट करूंगा, आप सब लोगों को ये बात रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपको किसी दिन ब्रिटिशर्स मिले या कोई वेस्टर्न थिंकर मिले और वो ये बात बोलने लग गए कि तुम्हें मालूम है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ना हम लोग तुम्हें गिफ्ट देकर लेकर आए, बोलना भाई तुमको ना भी ठीक से मालूम नहीं है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो. जब तक तुम्हें डी का डेमोक्रेसी लिखना और आर से रिपब्लिक लिखना आता भी नहीं था ना, उससे कई सौ साल पहले इंडिया में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चल रहा था. राइट, इतिहास की किताबें पढ़ो तब समझोगे. Having said so, yes, that India in its ancient times, in its kingdoms, in its empires, had many traces of democracy, had many traces of republic structure. लेकिन इस बात को भी नहीं मना किया जा सकता कि उसमें गैप आ चुका था. Ancient structures, ancient democratic structure, governance structure, because of the Britishers, because of the colonial times, हमारे सामने नहीं हो रहे थे. We had lost touch with those. Of course वो हमारे डीएनए में, of course वो हमारे कल्चर में, लेकिन we had lost touch with all of them. And because we had lost touch with all of them, हमने जो पिछले 200, 250, 300 साल से देखा था was the Western democratic structures. वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल जो हमने ब्रिटिशर्स का देखा, एंड ऑल्सो जब हम लोग इंटरनेशनली एक्सपोज हो रहे तो वी सॉ द वर्ल्ड मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेरिका एंड रशिया एंड व्हाट नॉट. मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट ओवर इट दैट व्हिच इज बेटर, द एंशिएंट इंडियन मेथड और द वेस्टर्न मेथड. मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि एंशिएंट इंडियन मेथड अपनी जगह पे अमेजिंग था, लेकिन हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस होते हुए नहीं देखा था. वी हैड लॉस्ट फेमिलियरिटी विद इट. नाउ इट वाज लेफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये छोड़ दिया गया. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये कॉल लेना था कि आर वी गोइंग टू अडॉप्ट द एंशिएंट मेथड्स, जहां पर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मालूम था कि देयर वर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड देयर वाज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स चल रहे थे, या फिर वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द वेस्टर्न मेथड्स जिसको, या वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या वेस्टर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसको हम पिछले 200-300 साल से हमारे सामने होते हुए देख रहे थे. नाउ in all their wisdom, Constituent Assembly decided to have more tilt towards the Western concept, which was, and I believe you me, was criticized heavily. In fact, there were many Gandhian thought processes, and some of the Gandhians actually said who wanted that ancient method should be adopted far more than the Indian method. They said that people expected to hear the music of Veena or the sitar, but instead they got an English band. I am not trying to suggest which one is better, which other one is worse. Sorry. But the point to remember over is that the Constituent Assembly ने जो choose किया, if I look at hindsight, you know, rear view mirror में जिंदगी में hindsight में देखते हैं ना, everything starts making sense. यार मैंने ये किया था इसीलिए ये हुआ, ये ना करता
तो ये ना होता, ये अब पहुंच गया, ये ऐसा हुआ. इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट. So at a place of convenience, it's very simple to look at hindsight and start connecting dots. Difficult होता है prospectively जीना कि जी मैं इस टाइम पर हूँ, I have limited information, I don't know what the future holds for me, and I'm still going to take a call. The Constituent Assembly, in all their wisdom, took a call. They decided to lean more towards the western part, primarily, probably, because of familiarity. और वो चला. What I am happy about, and what you should be happy about it, that it served us well. We have a vibrant democracy today, yes. We are the largest democracy, yes. In a way, it is working. What is bad, what is good is something that history decides, and this is a very academic exercise. क्रिकेट ग्राउंड में ऑडियंस में बैठकर ये बोलना कि यार बॉल ऐसी आई थी इसलिए बैटिंग ऐसी करनी गई, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट पॉइंट. लेकिन क्या ये तब करना आसान होता है when you have the skin in the game? So in their wisdom, Constituent Assembly ने किया, but amazingly किया. So the entire exercise, Part 15 of the Constitution, Article 324 to 329, Superintendent's direction and control will be in the hands of the Election Commission of India. उसकी पूरी autonomy, right? Everything. Universal adult suffrage, पूरा. I mean, people were on the neck, at the neck of the Constituent Assembly कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज आप कैसे दे सकते हो यार, ये तो इलिटरेट कंट्री है, 85% इलिटरेसी चल रही है, ये कैसे वोटिंग करेंगे? बाबा साहब said nothing. In fact, in the words of Alladi Krishna Swami Iyer himself, he said one of the boldest steps taken by the Constituent Assembly was the introduction of universal adult suffrage. We gave them, and that is how we started to doing this. The next and the most important is correct historical wrongs. Yes, बाबा साहब से बहुत बार पूछा जाता था कि बाबा साहब, what is the constitution? Is it a legal document? Is it a collection of laws? It is a collection of articles and schedules and all. Said no. At the end of the day, constitution, people's constitution. At the end of the day, it has to be a social document. Political democracy ठीक है, लेकिन हमको social democracy maintain करनी है. इस देश में कई सौ सालों से कई तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही, कई तरह की इनइक्वालिटीज घूम रही. इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन हमको हटानी है, अनटचेबिलिटी हमको हटानी है. आर्टिकल 15 लिखा गया एज अ फंडामेंटल राइट, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ race, religion, caste, sex, place of birth, or any of them. Untouchability, Article 17. Prohibition of untouchability in all its forms. All its forms. Freedoms दिया गया, Article 19 का freedoms. Article 21 mention किया गया that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. Article 23 and Article 24, which is actually in a way the prohibition of slavery, all of them were removed. The entire process of DPSPs, Article 38, the concept of welfare state, this is such an important concept, right? That there will be socio-economic democracy. चाहे आप DPSP की बात करो, पूरा preamble justice से start हो रहा है, political, social, economical. So it was supposed to be a social document, and बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी और इतनी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है और इतने उसको मर्ज करना है. इट्स इजियर सेड देन डन टू मर्ज इट टुगेदर, make it a document which will one day, if it is in the spirit constitutionalism जिसे बोला जाए और constitutional morality follow किया जाए, so everything will go. Poverty, we were realizing this is happening. We made India a welfare state. All of that को merge करना आसान नहीं है. So Ramachandra Goa की उनकी लाइन थी, he said, what a beautiful line he said. He has praised the Constituent Assembly for bringing together the moral vision, political skill and the legal acumen to create the Indian Constitution. Granville Austin, जिनकी बुक The Indian Constitution Cornerstone of a Nation, उन्होंने बोला कि it is such a big achievement, fundamental rights, untouchability को prohibit करना, big achievement, right? National and social revolution लाने का अगर कोई contribution कर सकता है तो वो Constitution of India कर सकता है. So we all must say big thanks. 26 November 1949 Constitution Day, संविधान दिवस, ये वो दिन है जब हम उस डे को सेलिब्रेट करें कि कैसे किया होगा यार. इट्स नॉट दैट सिंपल. सो इन द नेक्स्ट पार्ट आई वुड एक्चुअली राइट, आई विल बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इस प्रियम्बल के 26 नवंबर 1949 को उपलक्ष्य में, इनफैक्ट आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किए
और मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ लाई। तो यू कैन लुक एट दी स्क्रीनशॉट्स। इससे दो काम होंगे। तो दीज आर द स्क्रीनशॉट्स एग्जैक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। एंड देखो, तुमने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में से, एनसीईआरटी में से, कहीं ना कहीं से तुमने पढ़ा जरूर होगा। लेकिन one thing is to read, the other one is to look at the photographs, try and get some experience कि यार क्या हो रहा होगा ना उस टाइम पर। This is the photograph of 9 December 1946. This is in the first session of the Constituent Assembly बैठा। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जेबी कृपलानी साहब ने एड्रेस किया और सच्चिदानंद सिन्हा साहब हमारे फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट बने। 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ था और 9 दिसंबर को ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा। Isn't it nostalgic? As an Indian, as a true blue Indian, it makes you nostalgic. Wow यार, क्या हो रहा होगा, क्या बड़ा दिन आया होगा। After so many years and so many decades of slavery and colonization, we are writing our own constitution. What a big day. So ये फोटोग्राफ दिखाने के पर्पस दो है। एक आपको इमोशनल करना, विच एज एन इंडियन यू शुड बी। ओके, सिर्फ ड्राई रहकर यार क्या फर्क पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना बोलना होता है। No, you have to be emotional about it. And second, also make it an intellectual and academic journey because many of these questions are asked in your UPSC examination. तो दोनों काम करते हुए चलते। Let's look at this photograph now. So this is the photograph of the Union Cabinet. On the right side, it is the Union Cabinet. तुम्हें मालूम है हमारी देश की एक interim government बनी थी। So if you look at on the right in the center, you'll see Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru. Then, or rather, let's start going from the sitting position from the left to the right. So you'll see Dr. Ambedkar, Baba Sahib sitting, then Rafi Ahmed Kidwai, Baldev Singh Ji, Abul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, then Sardar Patel, you can see, John Mathai, you can see, and Jagjeevan Ram, Rajkumari Amritkar, if you see. So if you go to AIMS, sometime, All India Institute of Medical Sciences, Delhi, you'll see the name of the OPD is Rajkumari Amritkar OPD, which also gives you a hint that what department was she heading. And Shama Prasad Mukherjee, of course. And then standing Khurshid Lal, R. Divakar, Mohanlal Saxena, Gopalaswamy Iyengar, N.V. Gadgil, K.C. Yogi, Jairam, Stolotram, K. Santanam. You must have heard of the Santanam committee. And then S.N. Sinha and B.V. Keskar. So it was on 11 December 1946. Look at the left side of the screen now. 11 December 1946, that Dr. Rajendra Prasad was appointed as the President of the Constituent Assembly, S.C. Mukherjee as the Vice Chairman, and Benegal Narsingh Rao as the Legal Advisor. So these are often asked questions. Who was the President of the Constituent Assembly and who was the Vice Chairman? And Benegal Narsingh Rao, B.N. Rao, popularly you read him as B.N. Rao. So he was the legal advisor, the constitutional advisor. कभी-कभी ये question आता है कि who gave the first draft or who prepared the first draft of the constitution and handed it over to the drafting committee, which was under the chairmanship of Baba Sahib, who steered this through the Constituent Assembly. Also remember कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो जून और जुलाई ऑफ 1946 में इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस हुए थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 10 लाख इंडियंस एक सीट थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करीब 39 करोड़ पॉपुलेशन थी। 389 सीट्स उस अनुसार पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी। 292 प्रोविंसेस के इलेक्शन से आए, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आए, यानी कि 296 में इलेक्शंस हुआ। 93 जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने नॉमिनेट किए, तो इस हिसाब से हो गए 389। जब पार्टीशन हो गया, बिकॉज ये तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ, पार्टीशन हुआ 47 में। जब पार्टीशन हुआ तो इनमें से 299 इंडिया में रह गए। और याद रखना, इन 299 में से एक्चुअली 284 ने एक्चुअली लास्ट में साइन किया था द प्रियम्बल पे। तो ऑब्वियसली बिकॉज ये 2 years 11 months 18 days का अंतराल था जिसमें वी लॉस्ट सेवरल नंबर्स। सो देयर आर सर्टेन नंबर्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड दिस इज द बिग डे ऑफ 13 दिसंबर 1946 व्हेन जवाहरलाल नेहरू साहब ने इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन हुआ, फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, एंड देन फाइनली इट टर्न्ड आउट इनटू बी द प्रियम्बल। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं था। इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा था रेजोल्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, और हम लोग क्या बने? हम लोग बने सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं था, बट येस इट गेव अ ब्लूप्रिंट, अ जनरल आइडिया ऑफ वेयर वी वांट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। This is what an emotional moment. Okay,
So this is our Tiranga, this is our tricolor. 22nd July 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, just a few days before the Independence Day of 15th August 1947. What an emotional day. ये हमारी शान है एंड इस पर क्वेश्चन इनफैक्ट कोइंसिडेंटली आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर कि व्हाट आर द डायमेंशन. सो माइट एज वेल जस्ट मेक sure that you do this. I'm very thankful again to the government of India to having shared these photographs on their website. It gives us a glimpse into what this constitution and what this entire journey was all about. And then the big day. 15th August 1947, India achieves independence. Look at the newspapers. Birth of India's freedom. India independent. British rule ends. India celebrates freedom. And people celebrating the first Independence Day at Red Fort in 1947. क्या शान का, क्या प्राइड का मौका होगा, कितना बड़ा दिन था that we, after years of slavery, we ultimately became independent. And then 29th August 1947, वो कमेटी, इस कमेटी ने फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्टीयर किया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली headed by the chairmanship of Baba Sahib himself. So the greatest, the modern Manu of India, Baba Sahib, who led this, who was the chaired this committee, and the other ones were K. Munshi, Mohammad Sadullah, Radhakrishnan Swami Iyer, and Gopal Swami Iyengar, D.P. Khetan, and B.L. Mittal. It would do you a world of good that you remember all these names. Very often asked questions. Also, as concerned Indian citizens, as emotional students of law and constitution, which I would expect you to be, you should know all these great people by name as well as by faces. So this was the big day, which finally ended after 2 years, 11 months, 18 days on 26 November 1949. So 26 November 1949 is a day that is written, embedded on the Constitution of India. It was 2 months later, 26 January 1950, that the Constitution came into force. Jawaharlal Nehru Sahab in 1930 had on 26 January given what is called as a Purna Swaraj Declaration. Indian National Congress का एक declaration हो गया था. उस पॉलिटिकल इवेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्चुअली एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, बट द डेट दैट वाज रजिस्टर्ड ऑन द प्रीएम्बल वाज 26 नवंबर 1949. तो प्रीएम जो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था उसको क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग किया गया था. द लास्ट ऑफ दीज सेशंस वाज between 14th of November 1949 to 26th November of 1949 when this happened. And then finally on 24th January 1950, 284 members of the Constituent Assembly ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था. दिस वॉज द फाइनल टाइम. तो एक्चुअली द ओल्ड पार्लियामेंट, अब तो नया पार्लियामेंट बन गया, द ओल्ड पार्लियामेंट में एक प्लाक लगा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 9 December 1946 to 24 January 1950. 24 January 1950 was the last day the Constituent Assembly performed its constituent function. जब सब लोग वापस आए और उन्होंने 284 days में they appended their signatures on the constitution. So this is that photograph and a big day for India. And then finally India became sovereign. India became a republic, 2 years, 11 months and 18 days. And this is the grand day that we say that the Constitution of India was enforced. G.V. Mavlankar Sahab हमारे first speaker बन गए of the Lok Sabha after India turned into a republic. And now we could proudly say that we are no longer a dominion of any country. We are a sovereign country. So this was the day that 300 Article 395, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल था इन द ओरिजिनल बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 395 में बोला था कि आज के बाद नो लॉ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जितने भी पहले के फॉरेन लॉज थे, वी आर रिपीलिंग देम. वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट. तो एक बहुत बड़ी जर्नी यहां से यहां तक. आई एम श्योर कि एज इंडियंस हम इस दिन को प्राइड से देखते हैं. एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटी हम इस डे को ना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज बट ऑल्सो एज अ इमोशनल मोमेंट देखते हैं. तो जस्ट दैट वी हैव फिनिश्ड ऑफ दिस जर्नी. जस्ट टू रिकैप, के a short idea to understand कि ये जर्नी कितनी मुश्किल रही होगी. So, and finally, 1951 to 52, India goes for its first general election. बहुत लोगों को शक था, पूरा का पूरा वेस्ट इस चीज को अपोज कर रहा था कि इंडिया शायद कभी भी एक डेमोक्रेसी नहीं कर पाएगा, एजुकेटेड नहीं है, कैसे इलेक्ट करेंगे. बट बाबा साहब सेड नथिंग डूइंग.
Article 326 of the Constitution में every adult Indian will be given universal adult suffrage, will be given voting rights, and we will true and blue will come what is called as a government by the people, of the people, and for the people. As of now, we are the largest democracy, the most vibrant democracy, and I'm sure Baba Sahib ने जो हम पर भरोसा किया, okay, must have thought so much. Or we should be thankful to Baba Sahib and to the founding fathers of the Constitution to having given us this universal adult suffrage. And हम लोग बन गए एक डेमोक्रेसी एंड हम लोग रह रहे एज अ डेमोक्रेसी. सो व्हाई नॉट क्विकली डू अ फ्यू क्वेश्चंस, राइट? अगेन ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, अगेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी पीडीएफ में इसी अप्रोच को थोड़ा सा कंटिन्यू किया था. सो लेट्स एंजॉय दिस. ओके, सिंपल क्वेश्चंस, और एक्चुअली इन्हीं में से जो अभी मैंने फोटोग्राफ्स दिखाई है उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. सो पहला क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विटनेस इट्स फर्स्ट मीटिंग? 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1947? सो ज्यादा मुश्किल नहीं है. यू हैव 20 सेकेंड्स, यू कैन फटाफट आंसर. जो फोटोग्राफ्स दिखाई थी उसी में से पूछा जा रहा है. तो अनदर 10 सेकेंड्स, क्विकली आंसर करो कमेंट सेक्शन में. Which year did the Constituent Assembly witness its first meeting? And the answer, of course, is B. So 9 December 1946. If you have seen this, नहीं होगा तो ये वीडियो दोबारा एक और पीछे देख लेना, ओके, और उस फोटोग्राफ को देखना. 9 December 1946 clearly mentioned as the first session. एक और क्वेश्चन करते हैं. Which is the supreme law of India? Constitution of India, Supreme Court, Directive Principles या फिर Government of India? Supreme Law of India. यू हैव 30 सेकेंड्स, क्विकली आंसर करो. सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कौन सा है? वैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ करने में कोई खास तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी ओके, माइट एज वेल टेक अ कॉल ऑन दिस. ऑलराइट, एंड यू हैव 5 मोर सेकेंड्स. मुझे लगता है इसके सबके आंसर करेक्ट आएगा. आंसर ऑफ कोर्स इज ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? लेक्स रेक्स है, लॉ इज द किंग, एंड we live in the times of, or we live in the phase of governance which is called as constitutional supremacy. Who was the president of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Mahatma Gandhi या फिर सुभाष चंद्र बोस? Who was the president of the Constituent Assembly? Constituent Assembly के president पूछ रहा हूं मैं, किसी कमेटी का नाम नहीं लिया मैंने. सोच समझ के आंसर दो. You have say 15-20 seconds में फटाफट आंसर दो. Quickly comments में ही आंसर देते जाओ and you will be able to remember. मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है. इनफैक्ट बाद में इन वीडियो को पॉज करते करते धीरे धीरे वो सारी फोटोग्राफ्स देख लेना, सम वेरी गुड क्वेश्चंस हो जाएंगे. आंसर ऑफ कोर्स इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया था. तो यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1946? आई होप यू रिकॉल. हमने वो फोटोग्राफ्स देखी थी जिसमें यू नो फ्यू डेज की बात हो रही थी. मैं बताऊंगा तो तुम्हें हिंट मिल जाएगा, बट वो फोटोग्राफ आ रही थी तिरंगे की, तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर, रिकॉल दैट फोटो, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस पार्ट. 10 सेकेंड रहते हैं. व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? क्विकली आंसर. और नहीं भी याद होगा अभी तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, एंड ऑल्सो कीप इट very close to your heart in the sense both as an emotion as well as the UPSC prelims, because UPSC में question आया हुआ था very recently related to national flag. Go for this part. How many members of the Constituent Assembly signed the Indian Constitution? 290, 294, 284, 244. 2-3 बार तो मैं ही बता चुका हूँ, तो एक आध बार तो तुमको खुद को रियलाइज हो गया होगा. So you have say 10 seconds. Quickly answer. How many members of the Constituent Assembly signed the Indian Constitution? 290, 294, 284 या फिर 244? And I hope you remember, साइन करने वाले मेंबर्स थे 284. साइन करने वाले. Okay, so that was 24 January 1950. And the question, who was the first speaker of the Lok Sabha after India turned republic? If you remember actually the last slide, okay, मैंने पता था आफ्टर इंडिया टर्न रिपब्लिक हमारे लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे. ये वैसे भी लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस तुम यू आर जस्ट रिमेंबरिंग फ्रॉम दीज फोटोग्राफ्स, रिमेंबर दैट वाज द लास्ट स्लाइड. यू कुड हैव सीन दैट पार्ट, एंड यू हैव 5 मोर सेकेंड्स. आंसर ऑफ कोर्स इज जीवी मावलंकर. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस जर्नी.
ओके, प्लान ये था कि आपको इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको एक एकेडमिक एज वेल एज इमोशनल जर्नी के थ्रू गुजारूं. As Indians, we must celebrate this. We must realize that it came with lots and lots of toils, and it is our responsibility to make sure that the dream, the aspirations, the vision, everything with which the Constitution was written by the founding fathers, हम उसका respect करें and we follow it. So, in the words of An Academy, until next time, God bless and Jai Hind. In the words of An Academy, let's crack it.